नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। We have just started a section in chapter 4, which is section 3. In this, what we are learning so far and will continue to learn for the next 3 shlokas, how to understand karma on the platform of jnana. ज्ञान के स्तर पे कर्म को हम कैसे समझ सकते हैं, and how karma can be used as a springboard for attaining Krishna. Jnana can be used as a platform for attaining Krishna, and bhakti is the ultimate platform for attaining Krishna. तो भक्ति सबसे ऊंचा स्तर है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कर्म और ज्ञान से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। Krishna is telling that all paths finally lead to him. He is a common pathway. But some paths take a longer way, some paths are difficult. सारे पथ कृष्ण की ओर ही जा रहे, लेकिन कुछ पथ सीधे सीधे जा रहे, लेकिन जैसे कि भक्ति योग में, और कुछ इधर उधर भटक के कुछ और जिम्मेदारियों को उठा के, जैसे कि कर्म योग, कुछ और ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान योग, मेडिटेशन से, there are many other paths, but bhakti yoga is the straightest path that we can take towards Krishna. So shloka number 19, from 16 to 24, this covers this section, and we have completed 20 shlokas. So shloka number 19, we just covered yesterday, that we must work selflessly for a higher motive in life. हम जो काम करते हैं तो हमें अपने बारे में ना सोचते हुए दिव्य चेतना के साथ हमें काम करना चाहिए. And this is what Krishna is trying to give a clarion call to all his devotees. कृष्ण सारे भक्तों को ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप नित्य मेरे दास हो. You are my eternal servant. Your constitutional position is to serve me. तो आपका संवैधानिक स्थिति है मेरा सेवा करना. So Krishna is telling that we must not renounce action. Krishna is not telling that you give up everything and surrender unto him. Don't renounce action. You must renounce selfishness. सिर्फ अपने बारे में सोचना ये बंद करना चाहिए. So if we want peace in this world, we have to start thinking about other point of view also. We have to start thinking about other people also. Then only there can be peace in the world. So and the highest peace can be attained when everybody in the world becomes Krishna conscious. Because then everybody will understand. सब लोगों को समझ में आएगा कि कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानां है और सारे जीव जंतु का पिता है. सारे जीव जंतु का वो मार्गदर्शी भी है. सारे जीव जंतु का वो पालन कार भी है. One who takes care of every living entity. Every living entity is a devotee or servant of the Lord. When we come to know that we have a common platform like this, then peace will prevail. शांति बरकरार रहेगा इस भौतिक जगत में. So in shloka number 20, Krishna is again
telling us that we must act in detachment and we must not detach from action. हमें जब कोई हम कार्य कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए काम करना क्या चाहिए. Detachment means working, not just thinking about myself. Attachment means working, thinking about myself. And detachment means working, not thinking about only myself, not thinking about myself. We are thinking. So when we say detachment, हम हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे बारे में हम नहीं सोच रहे. जब हम सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे, that is called as attachment. So Krishna is telling, don't detach from actions. You must light the fire. हमें अग्नि को प्रज्वलित करना है हमारी जिंदगी में, लेकिन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं करना. So Krishna consciousनess means detachment from worldly things. तो भौतिक स्तर में न रहते हुए आध्यात्मिक स्तर की सोच से हमें जब हम जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, that is Krishna consciousness. So Krishna consciousness means attachment to Krishna. तो अटैचमेंट होना चाहिए. अटैचमेंट किसके ऊपर होना चाहिए? कृष्णा के ऊपर होना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु के होने ऊपर होना चाहिए. And then we also learned that Krishna is saying nirashraya. We must be nirashraya means we must not have any other shelter other than Krishna. In a sense, on a worldly platform, a father may give shelter to his child, he may give shelter to his wife, he may give husband may give shelter to his wife, son may give shelter to his older parents. So this material adjustment is fine, but our ultimate reliance must be on Lord Krishna. Everybody, not just on the person who's taking care of, we must be more and more dependent on Krishna. So we'll move on today. We'll be doing shloka number 21. So when we learned the word nirashraya, so now another word is coming here, nirashir. Let's do the shloka. Nirashiryata chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan napnoti kilbisham. So Krishna is coming straight to the point of how does a devotee act? How does a person in Krishna consciousness act? So already we have learned in shloka number 20, Tyaktva karma phala sangam. He must be nitya tutto, nirashrayaha, karmani abhi pravrittopi. Though he is doing all activities, naiva kinchit karoti saha. He is not entangled by the actions. So this shloka is telling such a man of understanding, so acts with mind and intelligence perfectly controlled. Yata chitta atma. Yata means controlled. What is controlled? Chitta and atma. Mind and intelligence is controlled. Gives up all sense of proprietorship. Nirashir. Or you can also say Tyaktva sarva parigraha. Because nirashir means one who is not desiring any results for himself. That is called as nirashir. All his activities are aimed at pleasing the Lord, pleasing his spiritual master, and for the general good of people. That is nirashir, not just about himself. Gives up all sense of proprietorship over his positions and acts only for the bare necessities of life. Shariram kevalam karma. तो कृष्णा के भावनामृत में जो स्थित है वो निराशी है. वो अपने चित्त और आत्मा, अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण में रख रहा है. त्यक्त्वा सर्व परिग्रह. तो उन्होंने सारे अपनेपन को छोड़ दिया. मतलब अपनेपन का मतलब सिर्फ सब मेरा है, सिर्फ मेरे लिए है, ये सोच उसने छोड़ दिया. Then what is the other? This one is done. Acts only for bare necessities of life. Shariram kevalam karma. तो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक जगत में जितना चाहिए उतना वो काम कर रहा है. Thus working,
he is not affected by sinful reactions. Kurvan na apnoti kilbisham. Kilbisham means sinful reaction. Na apnoti. He does not acquire. So though he is doing activities, because he is doing activities for the Lord, under the guidance of spiritual master and devotees, he is never entangled with the sinful reactions. Now, why is Krishna talking about sinful reaction? Why will a devotee commit sinful reaction? एक भक्त sinful reaction क्यों करेगा? जैसे कि मैंने बताया है, our existence in material world is a very complicated issue. Because though we don't want to commit sins, we are actually inadvertently committing sins. हम जानबूझ के कोई पाप नहीं करना चाहते हैं, especially a devotee, भक्त, पर उनके हाथ से पाप हो रहा है. कैसे हो रहा है? श्वास हम ले रहे हैं, we are breathing, millions of bacteria get killed. When we talk, so many bacteria in the mouth are getting killed. जब हम बात कर रहे हैं, इतने सारे कीटाणु जो मुंह में है वो मर रहे हैं. जब हम श्वास ले रहे हैं, कीटाणु मर रहे हैं. जब हम पानी पी रहे हैं, हमारे मुंह के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, पता नहीं कितने अंदर जा रहे हैं. जब वो पेट के अंदर जाएगा, फिर वो मिट जाएगा. So unwantedly and inadvertently, we are committing so many sinful activities. So it's a very precarious condition, material life. So we cannot have a happy-go-lucky kind of attitude, because every day, every breath we take, we are committing sins. So should we stop breathing? No, this is not in our hands. So when we breathe, when we speak, we must always be Krishna conscious. We must know that this is required for my existence. So बात भी कर रहे हैं तो केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हैं, फालतू फालतू चीजें बात नहीं कर रहे. So then our speech is also purified. So that means we are not going to get sinful reactions even by our speech. So a Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म. तो केवल वो शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना कर्म करना है उतना वो कर रहा है. His mind and intelligence are fully controlled. त्यक्त्वा सर्व परिग्रह निराशित यथ चित्तात्मा. तो यथ चित्तात्मा अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखा है. He knows that is part and parcel of the supreme. उसको पता है कि वो और बाकी सारे जीव जंतु भगवान के अंश हैं. And therefore the part played by him as a part and parcel of the whole is not by his choice but is chosen for him by the supreme. तो इसलिए क्योंकि वो भगवान का अंग है, तो अंग का कर्तव्य क्या है? जो शरीर को चाहिए वैसे एक्शन करना. So devotee, how you must act? A devotee must act in such a way that it fulfills the purpose of the Lord, because he is a part and parcel of the Lord. For example, a servant must act to fulfill the desires of his master. Simply understood like this. एक सेवक को कैसे कार्य करना चाहिए? उसको वही कार्य करना चाहिए जिससे उसके मास्टर को संतुष्टि मिले. अपने लिए वो कुछ भी करेगा, फिर he will be in trouble. So when the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. तो जब हमारे हाथ हिलता है, a lot of mechanisms are involved in it. There is a message that goes to the brain, then there is a response that comes from the brain, then by the nervous system, there is a signal given to the hand that now it should be raised. All this is happening subconsciously. If you start breaking this up medically also, it is unimaginable. कैसे हमारे शरीर काम कर रहा है. When we eat, when we breathe, when we evacuate, when we walk, when we talk, when we sit, when we listen, so many muscles, nervous system is activated, and in a very intricate way these actions are happening. Thankfully we don't have to be aware of it. Imagine if I have to make a sound, I must know which muscle to move,
and which nerve to activate. तो कितना मुश्किल होता हमारे लिए बात करना, काम करना, बैठना, उठना. All these happening automatically. And in medical science we learn how even to smile, इतने सारे मसल्स यूज हो रहे हैं. टू फ्राउन, इतने सारे मसल्स यूज हो रहे हैं. टू swallow, कितने सारे मसल्स यूज हो रहे हैं. हमें पता भी नहीं है कौन सा मसल्स है. Many of you will not even know. As a doctor and many other doctors here, they may know. But they are also not drinking water and thinking of which muscle to move now. अब कौन सा मसल मूव करना चाहिए, ऐसे थोड़ी पानी पी रहे हो. वो भी पानी पी रहे हैं और automatically it is happening. The body has got this reflex action and the nervous system is connected with the brain signals in such a way that it acts. So we must not be very proud of our scientific achievements, because there are many things which we do in our lives without even knowing how things are working, but it is happening. एक अनपढ़ आदमी भी जब खाना खाता है, ये सारे मसल्स एक्टिव हो रहा है. ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ है तो मसल बोलेगा अरे इसकी बात मैं सुनूंगा नहीं, इसको कुछ पता नहीं है. It doesn't work like that. Every muscle that has to act will act, even in an uneducated person. You don't have to be educated for the body to function. But yes, to know how the body functions, that's a different thing. So a Krishna conscious person is always doubting with the supreme desire. तो कृष्ण भक्त हमेशा कृष्ण के इच्छाओं से मतलब he is aligned. And he has no desire for personal sense gratification. अपने आत्म तृप्ति के लिए, अपने संतृप्ति के लिए वो कोई भी कार्य नहीं करता. केवल अपने आत्म तृप्ति के लिए नहीं करता. आत्म तृप्ति उनको भी होना है, but it will not be only about himself. He moves exactly like a part of a machine. जैसे कि एक मशीन में एक पार्ट मूव कर रहा है. It is moving to accomplish the purpose of that machine. So, as a machine part requires oiling and maintenance, similarly, a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action. Shariram kevalam karma. अपने बुद्धि, मन और देह को मेंटेन करने के लिए जितना उसको काम करना चाहिए भौतिक जगत में, उतना वो काम करेगा. He is therefore immune to all reactions of his endeavors. कुर्बन आपनोति ना आपनोति किल विषम. Like an animal, he has no proprietorship even over his body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest. Nor does he have any real independence. जैसे कि भेड़ बकरी को पालते हैं और त्योहारों में उसको काट देते हैं, और जैसे कि गाय को पालते हैं और उसके दूध को हम निकाल के हम पीते हैं. So, a Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. तो कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है उसको पता है everything belongs to Krishna. So I have been given a quota for me. मेरे लिए कुछ कोटा भगवान ने दिया है, तो उस कोटा को मुझे अपने लिए मैं यूज कर सकता हूँ. दूसरों के ताली में मुझे हाथ नहीं लगाना है. दूसरों के घर में क्या हो रहा है, in the sense I must not try to what do these land sharks do? Try to possess different people's lands, other people's lands. So this is a great sinful activity. So we must be concerned about what is there on my plate. What is there on somebody else's plate is not to be my concern. If something is not there in his plate, you can help him, but you cannot be envious if something is more in his plate. This is the kind of mentality Krishna wants his devotees to have. So for maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. तो केवल इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा वो कमा लेगा. It's not that he is going to dedicate his entire life, time, energy in earning money like a mad person. Money is required, but money should not be the main motive why all the work we are doing. When that becomes the main motive, then all we get is only money. तो हमारी जिंदगी में हमें केवल
पैसा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगा, गुड रिलेशंस नहीं मिलेगा, वी विल आल्सो नॉट हैव सेटिस्फैक्शन बिकॉज दैट इज नॉट अवर एक्चुअल पोजिशन। एक करोड़पति बनने से अगर कोई खुश रह सकता था, तो लोक में इतने करोड़पतियां हैं, अरबपतियां हैं, सबको खुश होना चाहिए था। बट वी नो दैट एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु आर having a good life and who commit suicide, that is an indicator for us that ये हमारे लिए सूचना है कि जो हम समझ रहे हैं कि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगा, यही सब कुछ है, वस्तु ही सब कुछ है, मेरे पोजेशंस ही सब कुछ है, तो वी आर एक्चुअली गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। बिकॉज आए दिन हम देखते हैं उसके पास सब कुछ रहता है और वो आत्महत्या कर लेता है, उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके रिलेशंस ठीक नहीं है, 2-3 डाइवोर्स हो चुका है। सो इवन ग्रेट पीपल, बिग अमेजॉन के द रिचेस्ट मैन world, Amazon, one of the richest men, he has also had a divorce, a very costly divorce he has had, but he has so much money that in spite of that costly divorce he can still lead a what we can call as a bountiful life. We cannot say a good life. तो good life क्या है? When we live for a certain purpose which is going to take her to the higher platform. So he is free from all reactions to his actions. So ऐसे व्यक्ति अपने सारे कर्मों से ऊपर उठ जाता है और कोई भी पाप कर्म उसको लेपित नहीं होगा. So we'll also do shloka number 22 and 23 because 20 to 23 they're all related shlokas. So what does the Krishna conscious person also do otherwise? What are the other actions he is doing? Here is the further actions. Yadruchala santushto dvandvatito vimatsaraha sama siddhav asiddhav cha krutvapi nanipadyate. So yadruchala santushto, he who is satisfied with gain which comes of its own accord, undue effort he doesn't put. So here we must not misunderstand that we must not put efforts. No, it is not that you must not put efforts. You must not put undue effort. किसी को ज्यादा मात्रा में भी नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में कभी नहीं करना चाहिए. ज्यादा करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है. जितना चाहिए ऑप्टिमल ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ वर्किंग हमें करना चाहिए. तो यदृच्छ लाभ संतुष्टो, जितना उसने काम किया उसके आधार पे उसको जो लाभ मिला उससे वो संतुष्ट है. नॉट दैट इज सेटलिंग फॉर लेस. जो उसने काम किया उसके आधार पे जो लाभ मिलना था उससे वो संतुष्ट है. इज नॉट गोइंग टू गो बाय ड्यूबियस मीन्स. गैर कानूनी कार्य करने पे या इतना सर खराब करके काम करने के बारे में वो सोचेगा नहीं. Who is free from duality, द्वंद्व अतीतो. मतलब duality, what is duality? Prabhupada reads in the purport, we will do it. Who does not envy, vimatsaraha, he is not having enviousness towards any other living entity. Who study both in success and failure, sama siddha asiddha. उसने कुछ कार्य किया, he was successful, or in other circumstances he was not successful. So दोनों circumstances में वो विचलित नहीं होता है. फिर वो he will go to the drawing board if he is not successful and then he will see. तो वो सोचेगा ये मैं क्यों इसमें मैं यशस नहीं पाया, तो he will formulate a plan and rework for it. So he can correct the course of action, not that he has to settle with what has happened. And when he gets success, he is not unduly elated, क्योंकि उसको पता है दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा. Such a person is never entangled, although performing actions. Krutva api na nibhadyate. Krutva, by acting, na nibhadyate. Though he is acting, he is not implicated. So
A Krishna conscious person does not make endeavor, even does not make much endeavor even to maintain his body. The word, key word here is much endeavor. जितना चाहिए उतना वो करेगा. ऐसा नहीं है कि असुर की तरह या फिर पागल की तरह दिन में 20 घंटे 22 घंटे काम करेगा. ये उसका सीन में नहीं है. Is satisfied with gains which are obtained of their own accord. So here Krishna is talking about in shloka number 22 actions which do not entangle us. कैसे हम भौतिक जगत में ना फंसे. How to be free by working for minimum requirements. He labors honestly as far as it is in his power. ऐसा नहीं कि वो कम मात्रा में लेबर करेगा. अपना पूरा शक्ति उसमें डालेगा जितना उस काम को चाहिए. And is satisfied with whatever is obtained by his own honest labor. और जो उसने honestly जितना भी उसको पूंजी मिला उससे वो संतुष्ट है. He is therefore independent in his livelihood. He does not allow anyone's service to hamper his own service in Krishna consciousness. So many times Krishna conscious people, they live a good working job and they try to become independent. They try to do some business or they try to make do with the savings that they have, or they join a good organization which is in line with his current thought. So people do that. Why they are doing that? Though they are going to get less pay, though they might not get as good a pay as in their corporate life. Why do they prefer to do? Because they now know what is more important. क्योंकि अभी उनको पता चल गया कि अब उनके जिंदगी में उनको कौन से विषय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. However, for the service of the Lord, he can participate in any kind of action without being disturbed by the duality of the material world. लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो जितना चाहे उतना काम करने के लिए वो तैयार रहता है. Because he knows that all the effort and energy, if he can put it for Krishna, then it's going to be worthwhile. तो सारे शक्ति और सारे अपना जो बुद्धि है वो कृष्ण के लिए उपयोग करेगा तो उसको पता है उसके उनको आध्यात्मिक लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा. The duality of the material world is felt in terms of heat and cold. So that's what I was telling in purport. Prabhupada talks about what is duality. He is not disturbed by heat and cold. He is not disturbed by misery and happiness. He is sama. He is in equilibrium in all these conditions. A Krishna conscious person is above duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. So duality मतलब ये करूं कि वो करूं, संतुष्ट रहूं या असंतुष्ट रहूं, कितना करूं, इतना करूं कि उतना करूं. So this is all dualities. करूं कि ना करूं, this is also duality. So Krishna conscious person has no duality. क्यों? क्योंकि उसको पता है जो कृष्ण भावनामृत में गुरु के आदेश से मुझे काम मिला है उसको मुझे करना ही है. There's no question of doing, not doing. और जितना करना चाहिए वो मार्गदर्शन मुझे भक्त और गुरु दे रहे. Again, there is no duality there. So that is why a Krishna conscious person goes above duality. Dvandvatito, that is the word that Krishna uses. द्वंद्व से परे हो जाएगा. Therefore, he is steady both in success and in failure. चाहे यशस मिले चाहे उसको वो यशस्वी हो अयशस्वी हो तत्काल, he is not going to be disturbed. What is required? Due course of action, corrective course of action he will do. जो उसको करेक्शन करना चाहिए वो करेगा और जितना काम करना चाहिए उतना वो करके आगे जाएगा. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge. तो ऐसा स्तर पे हम कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये सब कैरेक्टर्स हमें कब मिलेगा? जब हम दिव्य ज्ञान के स्तर पे
आ जाएंगे. When we completely believe, have faith in the words of Krishna, Guru and devotees, then it will not be difficult for us to acquire this kind of characters. क्योंकि वो द्वंद्व अतीत हो जाता है. He is not having any doubts in the words of Krishna, Guru and devotees. Otherwise, in the material world, whatever he does, there are always many opinions. So he will be in a state of dilemma. ये करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, कितने मात्रा में करना है. So this is the duality that is going to go about. So further going, continuation of actions of a Krishna conscious person. Gata sangasya muktasya nanavastita chetasa yajnaya charata karma samagram praviliyate. The work of a man who is unattached to the modes of material nature, Gata sangasya muktasya, who is fully situated in transcendental knowledge, gnana avasthita chetasa, तो वो मुक्ति की ओर जा चुका है, भौतिक जगत में बंधे हुए नहीं है, और ज्ञान अवस्थित चेतसा, तो इस वो दिव्य ज्ञान के स्तर पे है. fully situated in transcendental knowledge, merges entirely into transcendence. Yagnaya acharata karma. Yagna means Krishna. So he is working, acharata karma, he is working for the satisfaction of Krishna. Samagram pravidiyate. So Samagram, in total, he merges entirely in Krishna. मतलब वो already is in liberated state. A Krishna conscious person is already in a liberated state because he is situated in transcendence. So what is the effect of transcendental knowledge? Divya Gyan ka फल क्या है? Divyata, transcendence. We are situated in the stage of transcendence. So becoming fully Krishna conscious, one is freed from all dualities. तो कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आएंगे, द्वंद्व अतीत हो जाएंगे. And thus is free from contamination of material modes. तो भौतिक स्तर का त्रिगुण उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा. So Maya uses the three modes of nature to bewilder us. But Krishna is telling that we can go beyond the effect of Maya when we surrender to him. जब हम कृष्ण के शरण में आएंगे तो हम माया के जो पंजे हैं उससे हम छुड़ा के ऊपर उठ जाएंगे. He can become liberated because he knows his constitutional position in relationship with Krishna. So वो मोक्ष के हकदार है क्योंकि उसको पता है कि उसके और कृष्णा के बीच क्या संबंध है. And thus his mind cannot be drawn from Krishna consciousness. तो चाहे कितना भी भौतिक जगत में अट्रैक्शंस आ जाए, माया इस फॉर्म में उस फॉर्म में आए, वो कभी कृष्ण भावनामृत के स्तर को छोड़ के कभी नहीं जाए. Because he has already seen life on the material platform and now he has got a higher taste. तो उसको एक सदरुचि मिल गया है, तो वो कभी और जो लोअर रुचि के चीज है उसके पीछे अभी नहीं भागेगा. So consequently whatever he does for Krishna, who is the primordial Vishnu. जो भी कार्य करता है कृष्ण के लिए करता है. Therefore all his works are technically sacrifices because sacrifice involves satisfying the supreme person Krishna. Yagnaya acharata. So yagna acharata means work and sacrifice, nothing but working for Krishna. Krishna के लिए हमारा सारे कार्य को हम dedicate करना. The resultant reactions to all such work certainly merge into transcendence and one does not suffer material effects. तो इसका प्रतिफल क्या होगा? वो आध्यात्मिक स्तर पे दिव्यता, transcendence in that platform he comes and it does not suffer material effects. भौतिक स्तर के गतिविधियों से वो मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य का लेप उसके ऊपर नहीं होता है. So just recap what we did in this
3 श्लोकास. व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस? हमारी जिंदगी में हम ये सब कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो निराशर, निराशर का मतलब है वन विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर. तो क्या हम विदाउट बीइंग सेल्फिश कैन वी लिव इन दिस वर्ल्ड? सो कृष्णा इज नॉट टेलिंग डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ. कृष्णा इज ओनली टेलिंग डोंट थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ. सो इट्स अ बिग डिफरेंस. ऐसा नहीं कि हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए. यस, वी मस्ट know where next meal will come, what are the arrangements that are made, completely being dependent on the Lord. तो हमारे लिए सोचना है, लेकिन केवल हमारे लिए नहीं सोचना है. This is the platform of Krishna consciousness. This is how a Krishna conscious person acts. So when life is beating him, एक Krishna conscious person को भी भौतिक जगत में भौतिक गतिविधियां उसको मार दे रहा है. But when life is beating him, Krishna uses the situation in devotee's case to mold him into a better person. तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? जो परिस्थिति भक्त के जिंदगी में आ रहा है, उसको वो उससे वो उस मार से इस भक्त को वो एक रूप दे रहे हैं, और एक बेहतर भक्त बने, ऐसा वो रूप भगवान कृष्ण दे रहे हैं. So Krishna is using even a bad bargain of the material world to make him a more better devotee. So this is how Guru and Krishna work. They are not going to tell you that you will not get sufferings in life. तो अगर कोई आपको बताएगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद आपके जिंदगी में कोई सफरिंग नहीं आएगा, वो आपको मतलब he may be telling lies. Not that it will not happen. Yes, it will. It can happen. It depends on which stage we can go, because it's all about. Today I sent a quote. Life is 10% what happens to us, 90% how we react with what happens to us. तो वो विचलित ही नहीं होगा. So उसके लाइफ में जो मार आ रहा है, बीटिंग्स आ रहे हैं, उससे विचलित नहीं हो रहा है, उससे वो सीख रहा है. उसको मतलब और भी दृढ़ संकल्प हो रहा है कि भौतिक जगत में सिर्फ इतना ही है. जो भी हम अच्छे कार्य करेंगे मार मिलेगा, बुरे काम करेंगे इन द एंड मार मिलेगा ही. यमलोक तो जाना ही पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा. सो ही नोस that everything that is happening in the material world, he knows how to channelize it and make himself a strong Krishna conscious person. Krishna also is sitting in his heart. कृष्ण उनके हृदय में बैठ के आप परमात्मा बन के उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कैसे वो परिस्थिति को समझे और बुद्धि से उसको निभाए. So material things cannot make anyone happy. तो भौतिक स्तर पे कितने भी वस्तु आप अपनी जिंदगी में लेके आओ, billions of dollars, all the facilities and furniture of household you have with you, all the apparatus, all the devices you have, best AC, best fridge you have in your life, that is not a guarantee for happiness. It can give you a materially peaceful life to a certain extent. AC है तो अच्छा है गर्मी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि AC नहीं है तो जिंदगी नहीं चलेगा. आप जाइए बाहर, आपके स्ट्रीट में मिलेंगे कितने सारे लोग गर्मी में भी एक टेंट में लोग वास कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी खत्म हो गया. बट यस, वी आर नॉट सेइंग दैट यू शुड आल्सो डू दैट. जितना आपके पास सुविधा है उतना आप यूज कर सकते हैं. सो व्हाई वी शुड बी एनवियस अबाउट एनीबॉडी? तो किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास ज्यादा उपलब्धियां हैं, तो उससे ईर्ष्या करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट द thing that is going to take us ahead in Krishna conscious life. So this is how Krishna brings us to the platform of Krishna consciousness by talking about how a devotee acts. तो कैसे एक भक्त अपने जिंदगी में कार्य करता है, ये हमने आज सीखा. Thank you very much for joining me today. The next 2 days we will not have any session. We will take a break because again the weekend we are starting off with your Prabhupada Ashraya courses. You will get the date and time for each level. Please be present. Thank you very much.